हेलो एवरीवन। मार्केट है वोलेटाइल और इन्वेस्टर्स है परेशान। क्या है बेस्ट तरीका अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में रखने का? आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज टू मेक द मोस्ट ऑफ द करंट मार्केट सिचुएशन। वेलकम टू पेटीएम मनी टॉक्स एपिसोड 14 इन्वेस्टिंग इन मिड कैप कंपनीज। आज के एपिसोड में हम मिड कैप कंपनीज के थ्रू एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं पता कर सकते हैं। आज के एपिसोड में मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होता है, हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि इन सेक्टर्स में जब हम इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। सो मैं हूं मुजम्मिल सैयद, आपका होस्ट फॉर टुडे सेशन। और हम क्या करते हैं, हम पेटीएम मनी में ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम आपको वैल्यू दे पाए। सो वी एट पेटीएम मनी आर ड्रिवन टू प्रोवाइड वैल्यू लाइक नो अदर। हम चाहते हैं कि वी एज अ प्लेटफॉर्म आपको वो सारा इंफॉर्मेशन दे सकें जो आपको नए अपॉर्चुनिटीज, नए स्ट्रैटेजीज और अच्छे डिसीजन लेने में मदद कर सके। Paytm Money Talks is one such platform we built to ensure कि आप सब जो Paytm Money से जुड़े हुए हैं इन मार्केट इंफॉर्मेशन का लाभ सही तरीके से उठा सके। सो हम Paytm Money Talks में क्या करते हैं, हम Paytm Money Talks में एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लाते हैं और उसको एक फाइनेंस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जैसे इंसान हो सकता है या फिर कोई दूसरे वॉक ऑफ फेज में एक इन्फ्लुएंसर होता है, उनको हम एएमसी के एक्सपर्ट्स से मिलाते हैं और इनके वार्तालाप को आपके सामने रखते हैं सो दैट यू गेट इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट आउट देयर। इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम। कोई भी क्वेरी हो आप सॉल्व कर सकते हो इन दिस यूनिक प्लेटफॉर्म, इन द यूनिक वे दैट वी प्रेजेंटिंग इट टू यू। सो शो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी वेरी पर्सनल मैटर और आपकी जरूरतों को समझने के लिए हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। शो के दरमियान आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप तक आपके सवालों के जवाब पहुंचा सकूं। और इसके साथ साथ आपको अगर फॉर्मेट लेवल पे, इफ यू वांट टू नो समथिंग मोर फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर, इफ यू वांट टू नो समथिंग मोर फ्रॉम द फंड मैनेजर और द सीआईओ दैट वी ब्रिंग इन, तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन आपको आपकी जरूरत के हिसाब से हो। इसके साथ साथ आई वांटेड टू थैंक एवरीवन हु इज बीन अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। आज हमारा 14th एपिसोड है और 14th एपिसोड के हिसाब से वी कम अ लॉन्ग वे एंड वी कम क्लोज टू अबाउट 12,000 सब्सक्राइबर्स व्हिच इज a good achievement for ourselves. So I really want to thank for everyone who's been an active contributor for making this platform what it is today, and request everyone to subscribe if you haven't already and call your friends because this is going to be a very good conversation. So coming back to our main agenda, that is investing in mid cap companies. क्या आप जानते हैं कि ग्रोथ फेज में मिड कैप कंपनीज इज वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी, बट उसके साथ साथ वॉलेटाइल फेज में इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर्स। तो आप सोचेंगे व्हाई इज दैट, ऐसा क्यों है कि जब ग्रोथ हो रहा है तो ये सेक्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है और जब तहलका होता है तब ये कंपनीज में भी सबसे ज्यादा तहलका होता है। तो ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मिड कैप कंपनीज होती क्या है। और मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण इज कि अगर इमेजिन करें आपने एक कंपनी बनाई है, वो कंपनी को अगर रिलायंस जितना बड़ा बनना है, लाइक रिलायंस को अगर लार्ज कैप स्टॉक हम बोले तो उसको एक जर्नी फॉलो करनी होती है। तो वो जर्नी ये है कि वो पहले स्मॉल कैप बनेगा,
अब स्मॉल कैप इज एनी कंपनी विच हैज मार्केट वैल्यूएशन अंडर 5,000 करोड़ रुपीज। फिर स्मॉल कैप जब बन जाएगा तो उसको स्मॉल कैप से मिड कैप तक का अपना जर्नी कवर करना होगा। तो मिड कैप कितना होता है? 5,000 से 20,000 करोड़ की अगर आपकी कंपनी हो, मार्केट वैल्यूएशन हो, तो आपकी कंपनी मिड कैप में आती है। अगर 20,000 करोड़ के ऊपर चले आते हो आप, तो वो लार्ज कैप कंपनी हो जाती है। तो इमेजिन करें कि आप ये कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका पोटेंशियल इज टू बिकम समथिंग लाइक as big as Reliance, maybe as big as TCS or Infosys, the biggest ones out there. So आप नोटिस करेंगे कि 2,000 करोड़ multiply हो सकता है in a lot of ways to reach that number. But some company which is already at maybe 40-50,000 crores of market cap, it'll take a little more longer for that company to double its size or triple its size over a period of time. In the growth trajectory, it becomes important to track these companies. तो जब volatile नहीं होता तो ये छोटी कंपनीज जिनके पास बेस नहीं होता ऑफ कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस, जो भी करते हैं वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, they take a hold and it becomes difficult for them to sustain, and that is why they are most volatile, but उनका growth aspect भी सबसे ज्यादा होता है। तो now that we understand कि ये जर्नी है, हम आपको ये भी बता दें कि सारी कंपनीज स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये जर्नी पूरी नहीं कर पाती, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू चूज द राइट companies when it comes to investing in mid cap or small cap or very technical area that we intend to invest in. ये investment decision लेते वक्त it becomes more important because then you need to know that what the company is doing in specific, what are the actions they're taking, what are the information or the action points that you know about on the go in the ways that you can. So ये conversation, now that we all understand mid cap क्या है, mid cap investing क्या है, what are the factors that we need to look at, let me invite the first guest of our show, Mr. Manoj Kumar Jain. So Manoj Kumar Jain को मैं follow I think कुछ महीनों से कर रहा हूँ, like I think 6-8 महीने तो हो गए हैं when I first stumbled upon his profile, and for the first video I ever saw, I was sure that इनसे entertaining फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मार्केट में आज नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएं और अगर आप इफ यू आर वन ऑफ द रेगुलर यूट्यूब कंटेंट व्यूअर जहाँ पे आप फाइनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने मनोज जी के कोई ना कोई वीडियो तो देखे होंगे और आपने उनके सिग्नेचर हैट के थ्रू जरूर पहचाना होगा। तो मनोज कुमार जैन, despite of being as witty as he can be, he's also highly capable, credible, because of the numerous accolades that he holds. He's not just a CA, but he's a rank holder CA across all the patterns. Him along, he has studied from SRCC and then went on to become a chartered accountant and also a cost accountant. उनके साथ साथ वो स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं एंड यूट्यूब का चैनल भी करते हैं। तो ही इज बिकम लाइक द हब ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट कैन कम, और वो हमारे साथ यूट्यूब पे डिसिपिटेट करते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी to invite somebody who has more than 550,000 subscribers on YouTube, Mr. Manoj Kumar Jain. So I'm very happy to have you on board today. Sir, कैसे हैं आप? मस्त, as usual, मस्त। नहीं, आपको आपसे बात करके दिल खुश हो जाता है, एंड ये मैं जनरली बहुत सीरियस होके बात करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि ऐसे मेरी स्माइल हमेशा मेंटेन रहेगी। बट रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड सर। आपके प्रोफाइल के बारे में मैं जो बोला, आई एम श्योर इट इज नॉट इनफ। आई वुड रियली वांट यू टू perhaps speak a little bit about yourself to the audience who's looking at us right now, little bit about who you are, आपकी क्या जर्नी रही है, और फ्रॉम हु यू वर टू दिस यूट्यूब फिनोमिनन, ये जर्नी कैसे देखी आपने? देखिए, बात अगर शुरू करें तो बहुत पीछे चली जाती है, 11th क्लास में आ जाती है, व्हेन वी टुक कॉमर्स। तो जब 11th में कॉमर्स ली तो पहली दफा आज समझ में आया भाई ये कंपनी क्या होती है। फिर उस जमाने में हमारे टीचर थे, DSC होता था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके रिंग में लेके गए। आज जैसा जमाना नहीं होता था, तब कहते हैं फिश मार्केट होती थी, सारे ब्रोकर्स खड़े हुए चीख रहे हैं, रिलायंस 200, 201, 200, 201, मतलब वो जमाना ही कुछ और था। तो तब क्यूरियोसिटी जागी, तब से लगातार इन्वेस्ट करते रहे। फिर SRCC पहुंच गए, वो भी कॉमर्स का एरिया था, वहाँ सारे लोग
शेयर मार्केट ही करा करते थे, वो चलता 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 ही रहा। अब लेटली जैसे अब थोड़ा मैच्योर्ड हो गए, सब काम छोड़ के अब जैसे कहते हैं फुल टाइम, कहते हैं ना वो लास्ट डेस्टिनेशन पे आ गया। अब तो बस शेयर मार्केट ही शेयर मार्केट है, अब तो कुछ नहीं, सिर्फ शेयर मार्केट। यानी लगभग जर्नी तो 38 ईयर्स की हो जाती है। तो सब अप एंड डाउन देखे, आपका हर्षद मेहता वाला पीरियड भी देखा, वो जमाना भी देखा जब सेबी नहीं होता था, वो जमाना भी देखा जब मल्टीपल एप्लीकेशन लोग लगाया करते थे आईपीओस में। तो सब चीजें मतलब जर्नी तो लंबी हो जाती है, पर काफी एंजॉय। अब 38 फुल ईयर्स कह रहे हैं आप? 8 ईयर्स 38 ईयर्स? 11th क्लास से। बाप रे बाप रे! मैं 31 साल का हूँ, मैं अभी रिसेंटली 31 ईयर्स ओल्ड हुआ हूँ। तो मैं आपको सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस मेरे उम्र से ज़्यादा है, तो बहुत क्रेज़ी, बहुत क्रेज़ी। सो मार्केट के बारे में अनडाउटेडली आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा बिकॉज़ यू हैव सीन इट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपका खुद का एक पर्सपेक्टिव होगा हाउ यू व्यू द मार्केट इंडिपेंडेंटली। सो कंसिडरिंग अभी का जो हालात चल रहे हैं, यू नो वी हैव सीन one of the top 10 biggest one day crashes that we've seen happening yesterday. The market is definitely very volatile. आपका व्यू क्या है ये मार्केट के लिए अभी? And somebody like me who's a long term investor who wants to just get in and stay there for the longest time, उनके लिए ये मार्केट क्या है? Is there a reason for us to be scared? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। तो हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरा इस वक्त एक ही डायलॉग है, मैं रुकेगा नहीं। हर फॉल पे आप इन्वेस्ट करिए और डायलॉग बोलिए, मैं रुकेगा नहीं। अब कल जी। बाजार गिरा था, तो हर 5 मिनट के बाद कुछ ना कुछ खरीदा, और एक ही डायलॉग जा रहा था, मैं रुकेगा नहीं। तो ये तो वक्त होता है जी। अब कल सबका मामला खराब था, हालत खराब थी। मेरे अपने शब्दों में थोड़ा, आपने देखा मैं थोड़ा मजाक ज्यादा करता हूँ, तो सबकी धोती खुल गई थी कल, पर मैं रुकेगा नहीं। तो इस वक्त मैं इन्वेस्टर के लिए तो एक ही मेरा सजेशन है कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज बड़े कम आती हैं। इस वक्त जो शेयरों के रेट है ना, वो जी। कोविड वाले, प्री कोविड वाले, सॉरी पोस्ट कोविड, जब कोविड आया था उस रेट पे माल आ गया, शेयर्स जी। सस्ते अवेलेबल हो गए। इस वक्त एक ही डायलॉग है, मैं रुकेगा नहीं। ऑसम। तो नहीं ये मैं भी कल सोच रहा था बट एज अ न्यूबी इन्वेस्टर somebody who has only like 5-7 years of experience doing this, you always keep thinking, is this the time to get in? और जाएगा या नहीं जाएगा? A lot of thoughts came in yesterday. I did buy some बट दिल खोल के मैं नहीं कर पाया, मैं खुद बहुत डरा हुआ था। सो क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव बहुत लंबा है, तो आई थॉट कि मेरे SIPs हैं, आई डोंट नो क्या करना चाहिए। देन आई रियलाइज मैं आपसे कल बात कर रहा हूँ, मैं आपसे डेफिनेटली ये सवाल पूछूंगा इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। बट नाउ दैट यू हैव सेड दैट जब मार्केट प्राइस लो होता है, इन यूर प्लेइंग ऑन प्राइस स्पेसिफिकली, आपके आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? लाइक आर यू कंटिन्यूसली आप कंटिन्यू करने वाले हैं बाय करने के लिए और नो? मेरा ना बेसिकली जो स्ट्रेटेजी है इस पीरियड के लिए बड़ा वेल डिफाइंड है, और काफी पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, जिसको मैंने नाम दिया है MKJ FFD। तो अपने ठीक। शब्दों में बोलूं, MKJ फिक्स फिक्स डबल, फिक्स फिक्स डबल। यानी कहने का मतलब क्या है, अपनी इन्वेस्टमेंट को ना इंडेक्स के साथ सिंक्रोनाइज कर लिया। मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूं। आप इंडेक्स के फॉल को 500 के स्लैब में ले लो। अब आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया 17,000 पे, 17,000 पे आपने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, अपना एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करिए और बैठ जाइए। फिर जी। लेट द मार्केट फॉल, नहीं फॉल करती आप बैठे रहिए। लेट इट फॉल बाय 500 पॉइंट्स, वंस इट रीचेस 16,500, इन्वेस्ट अनदर एक्स। सो अमाउंट जी। इज X, then X. Now, if it ओके। falls by another 500 points and the market reaches around 16,000, then you need to double it. This जी। time, one should invest 2x. This is what I do. I will invest ओके। 2x. So it becomes fixed, fixed, double. First ओके। X, then 2x. Another fall of 500 will attract an investment of 2x. ओके। Thereafter, it will become 4x जी। for 2 times, then 8x. So fixed, fixed, double. तो उसमें क्या होता है कि ये ना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, हमने आपने भी पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है, ये जीपी बन जी। जाता है। नॉर्मली तो जीपी तो होता है कि x, 2x, 4x, 8x, 16x। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, पैसा ना खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्लो कर दिया। कैसे? x, x, 2x, 2x, 4x, 4x, 8x, 8x, यानी
फिक्स ओके फिक्स डबल, 2 बार फिक्स फिर डबल, मतलब उससे क्या थोड़ा आपको स्पेस मिल जाती है, यू आर एबल टू एक्यूमुलेट मोर एट लोअर प्राइस। अब ये जो मैंने ओके 500 का गैप बोला ना, ये हर आदमी का अपना लेवल है, उसके पास कितना फंड्स है। जिसके पास बहुत जी ज्यादा फंड्स है वो 250 का फॉल ले सकता है, जिसके पास बहुत कम है वो 1000 का ले सकता है। मतलब रिस्क जी को भी अपना देखना पड़ेगा, पर स्ट्रेटेजी सिंपल, फिक्स फिक्स डबल। तो एमकेजे फिक्स फिक्स डबल। ओ नाइस एमकेजे फिक्स फिक्स वेरी कूल वेरी कूल। मैं अभी आप बोल रहे थे स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, डू यू थिंक मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव करेक्टेड इवन मोर देन दे शुड हैव, कंसीडरिंग लार्ज कैप में भी हमें बहुत बड़ी बड़ी गिरावट देखने मिली है? डू यू थिंक मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर एट द सेम लेवल और हैव दे करेक्टेड अ लिटिल मोर देन द बिगर स्टॉक्स आउट देयर? देखिए वैसे मैंने ना अपनी स्ट्रेटेजीज को कि मैं मार्केट में लगा रहता हूँ, कॉन्स्टेंटली मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा स्टाइल इज सिंपल, मैं कभी किसी से जी नहीं कहता आप ये लो, मैं लेता हूँ तो बता देता हूँ। कोई कहता भाई ये जी कंपनी अच्छी है, मैंने कहा अगर मैं लूंगा तो मुझे तो अच्छी लगेगी, ऐसे कहने से क्या फायदा, राइट। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देता हूँ, क्योंकि जब हम खुद इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमें मुश्किल आती है, समस्या जी आती है। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं मुजम्मिल ने पूछा सर ये कंपनी कैसी है, अच्छी है ले ले मुजम्मिल। सर आप ले रहे हो? नहीं यार मैं नहीं ले रहा। अरे भाई आप क्यों नहीं ले रहे जब अच्छी है तो? भाई हाँ अच्छी जी तो वो चीज है ना जो मैं ले रहा हूँ। आपने कहा भाई मैं गुड़गांव में घर ले लूं, हाँ ले ले। आप कहाँ रह रहे हो सर? मैं तो आपको क्या मुझे क्या गुड़गांव भेज रहे हो? तो मैंने हाँ जब जी आया ना स्टॉक मार्केट में, जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया अपना, तो मैंने कहा यार मैं किसी से नहीं कहूंगा तुम ये ले लो, जो लूंगा बता दूंगा भाई मुझे ये अच्छा लगा, आज मैंने ये लिया। अब उससे क्या होता है कि मेरे मेरे फंड्स खुद इन्वॉल्व होते हैं तो मैं फंस जाता हूँ। अब जैसे इस वक्त गिरावट हुई तो उसमें ना जी नए नए आइडियाज निकल के आते हैं। एक्चुअली व्हेन जी यू आर ट्रैप्ड ना, आप किसी जाल में फंस जाते हैं तो आप सोचते हैं मैं निकलूं कैसे, यहां से निकलूं वहां से निकलूं। आपका दिमाग ना कंप्यूटर की तरह चलने लगता है, क्योंकि आप फंसे हुए हैं। अगर दूसरा फंसा होता तो आपको इतना पेन नहीं होगा। आप मैं फर्क नहीं मेरी पड़ता। बात समझ रहे होगे। आपको चोट लग जाए मैं नहीं बड़ा कुछ नहीं, चीटी मर गई चीटी मर गई। जब मुझे लग जाएगी हाय मैं मर गया, तो थोड़ा डिफरेंस है। तो आपके चैनल पे आज मैं एक बहुत बढ़िया खुलासा कर रहा हूं, जो मैंने अभी अपने चैनल पे भी नहीं बताया, मॉडिफाइड। आपने मिड कैप का पूछा ना, ये मैंने ऑब्जर्व किया बड़ा ध्यान से रखते हो। जैसे हमने अब बात की ना फिक्स फिक्स डबल, इसमें जी इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, और ये म्यूचुअल फंड वाले भी फॉलो करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों का ना एक प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम बेचारा भाई ये है कि वो कैश नहीं होल्ड कर सकते। सेबी का जी डायरेक्शन है कि भाई इतना परसेंट ही कैश रखोगे, रिमेनिंग यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। तो ये स्ट्रेटेजी म्यूचुअल फंड वाले भी फॉलो करते हैं, मैंने क्लोजली वॉच किया है, जो छोटे इन्वेस्टर भी फॉलो कर सकते हैं। जब मार्केट बहुत हाई हो और वो गिरने लगे, तो इनिशियली ना उनको ना निफ्टी 20, मतलब जी निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। मतलब निफ्टी का मतलब हो गया लार्ज कैप हो गया ना, निफ्टी जी इंडेक्स म्यूचुअल फंड या निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी उसमें क्या होता है कि फॉल कम होता है। अगर आप जी देखेंगे अभी जो मार्केट है 18,600 से कितना है, 16,500 है आज। तो यानी जी 2,000 पॉइंट ही तो गिरा है। दो हाँ हजार जी पॉइंट मतलब 12%। लेकिन आप शेयर्स देखिए 50% गिर गए। आप हाँ जी आईजीएल को देखिए बर्बाद हो गया है, एमजीएल को देखिए लुट गया है। आप शेयरों के नाम लीजिए आपका दिमाग घूम जाएगा, यार ये क्या हो गया। मतलब जी 50% कैपिटल ऑफ हो गया जी। मतलब आप उसको देखिए, मैं बताऊं वो इंडिया मार्ट, भाई साहब लोग पागल हो गए हैं, सर मैंने 9,500 का लिया मैं क्या करूं, अब तो 4,500 का हो गया है। यानी हाहाकार मचा हुआ है भाई साहब। अब हाँ जी इसमें स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें तो पता नहीं शेयर्स कितना गिरेंगे। तो इनिशियल स्टेजेस पे ना हमें इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, जैसे जी निफ्टी का हो गया, और बेसिकली निफ्टी सबसे बढ़िया, उसमें इन्वेस्ट करें। अगर जी मार्केट लगातार गिरता रहेगा ना, तो बाकी स्मॉल कैप मिड कैप इनकी धुलाई हो जाती है। जब इनकी धुलाई हो जाती है ना, तो आपके पास पैसे सारे फंसे हुए हैं, तो आप अपने जी लार्ज कैप वाले फंड्स को बेचें, और वो पैसा आप स्मॉल कैप और मिड कैप में लगा दें। जब वो वापस चलेगा ना, तो यहाँ आपका पैसा 3 गुना 4 गुना हो सकता है। पर ये जी इसमें आपको कंपनी अच्छी ढूंढनी है। अगर कंपनी गलत हाँ होगी तो फंस जाओगे। क्योंकि देखो एक बात समझना, जब आप किसी एक कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, तो आपका सिस्टमेटिक रिस्क तो उतना ही रहता है, पर जी अनसिस्टमेटिक रिस्क बढ़ जाता है। बढ़ और जब जाता आप है। इंडेक्स में लगाते हैं तो आपका ना अनसिस्टमेटिक रिस्क खत्म हो जाता है, सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क यानी मार्केट रिस्क रहता है। तो ये तो थोड़ा आप सा मतलब ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से जितना बाजार गिरेगा ना, उतने लोअर लेवल्स पे मिड कैप स्मॉल कैप और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मतलब आपका मन करेगा यार, एक ही दिल से आ जाएगी ले 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 ले, इसको लेना है भाई साहब। नहीं तो ये बात से मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर कोई कंपनीज खरीदना ही नहीं चाहता तो वो लार्ज कैप का ईटीएफ ले और यू नो व्हेन व्हेन जब छोटे स्टॉक्स धुलाई ले लेते हैं जैसे आपने कहा
उसके बाद अगर कंपनी नहीं खरीदनी तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप का इंडेक्स फंड भी ले सकते हो, सो बिल्कुल। दैट यू आर ऑन द सेफर साइड, बस कि शिफ्ट ग्रो करते रहो होगा ना। तो इंडेक्स ही होगा। तो ये लेवल है, बड़ा सिंपल बताओ, ये लेवल है इस वक्त, मान लो दोनों का है, ये है लार्ज जी, कैप, ये है स्मॉल कैप। आपको जी, अभी समझ नहीं आ रहा, आप लार्ज कैप में पैसे लगाइए, वो बढ़ रहा है, लार्ज कैप बढ़ रहा है, ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, कोई बात नहीं। फिर जब गिरना शुरू होगा, ये धीरे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, धीरे गिरेगा, जी, ये ऐसे गिरेगा। भाई साहब, ये थोड़ा गिरेगा, वो नीचे चला जाएगा। जब देखो काफी नीचे गया, थोड़े थोड़े पैसे इसमें से निकाले और इसमें डाल दिए, सारे मत डालिए जी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितना गिरेगा। हर फॉल पे थोड़े पैसे निकाले वहां डाल दिए, या फिर कैश रखिए। जिसके लिए मैंने कहा ना, इसकी मेरी एक स्ट्रेटेजी है, उसका नाम है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, भाई जी। MKJ 50-50। मैं कहता हूँ भाई, प्यार का वादा 50-50, क्या है इरादा 50-50, 50-50, आधा आधा 50-50। 50। मैं कहता हूँ भैया, इस बाजार में वही कामयाब होगा जिसके पास आधा पैसा कैश में होगा। जी, आपको मैं बताऊं, आज मेरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में हो गई है लगभग 60% और कैश हो गया 40%। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 50-50 था। मेरे ओके, सारे इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो दिखाया था, 50-50 था। ये जो गिरावट हुई ना, जो मैंने कल गिरावट खरीदा है, जिसमें मैंने कल कहा था मैं रुकेगा नहीं, मैंने अपना जी, 10% मामला वहां डाल दिया। कल 10 नहीं डाला होगा तो 8 डाल दिया होगा। फिर कुछ मेरी पुट इन द मनी हो गई तो उनके पूरे के पूरे लॉट उठा लिए। यानी अब मैं 60, मतलब कैश अभी भी अवेलेबल है कितना, 40%। अब हाँ बाजार जी, गिरेगा, मेरे लिए तो मस्ती है, बाजार चढ़ेगा तो भी मस्ती है। कहते ना, आगे हाँ भी जी, मस्ती पीछे भी मस्ती। भाई तू गिर जा, हम खरीद लेंगे, तू बढ़ जा, हम बेच देंगे। हाँ यानी जी, अपने को कोई चिंता नहीं है भाई, तू जहां जा कोई दिक्कत नहीं है। तू बढ़ जा तो इतना सारा माल है, उसमें से थोड़ा बेच देंगे। तू गिर जा, जी, कैश रखा है, उससे खरीद लेंगे। खरीद तो यानी लेंगे। 50-50 जो है ना, बस MKJ 50-50 स्मॉल इन्वेस्टर के लिए एक बून है। ऑल्दो बड़ा मुश्किल होता है इस टेम्पटेशन को रोकना। मेरे एक जी, जानकार है, मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा यार कितने पैसे लगा दिए स्टॉक मार्केट में, सारे लगा दिए। मैंने कहा सारे क्यों लगा देते हो यार, वो रुकता ही नहीं जाता हमसे। मैंने कहा यार 50-50 करो ना, ऐसे थोड़ी होता है, 50 पे हाँ रिटर्न जी, नहीं आती है। फिर भाई वो 50 की अब आएगी ना रिटर्न, वही माल 50% नीचे मिल रहा है। हाँ तो जी, वो देखिए, आप गैस करिए जी। एक्चुअली स्टॉक मार्केट को ना लोग बड़ा सीरियस बिजनेस लेते हैं। जब मैं स्टॉक मार्केट में वीडियो बना रहा था, सबने कहा यार मनोज, तू इतना क्वालिफाइड है, इतना पढ़ा लिखा है यार, तू कोट पहन के टाई लगा के आया कर। मैंने कहा नहीं यार, मैं टी शर्ट में आऊंगा। आई वॉन्ट टू मेक इट टोटली इनफॉर्मल। अबे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी प्रेशर। बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भाई साहब चलो प्रेशर है, टाई लगा के जाना है। यार इन्वेस्ट कर जी, रही है तो मतलब लेजर वाला काम होना चाहिए ना। अपना ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, साली टाई कोट की क्या जरूरत है, अपना टी शर्ट में काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में ना, बाजार गिरे तो उदास ना हो। आप देख रहे होगे बाजार कितना गिरा होगा। कल कई बच्चे कमेंट लिख रहे थे, सर बाजार इतना गिर गया, आप अपना हंस रहे हैं, कोई अच्छी बात है। मैंने कहा यार, इसमें मैं दुखी किस लिए हूँ। आई हैव हाँ, टू सेलिब्रेट इवन द फॉल। डिस्काउंट पे है, अब तो माल सस्ता है, डिस्काउंट चल रहा है। खरीदो। बिल्कुल। तो ये बड़ा डिसिप्लिन वाला गेम है, ये आसान गेम नहीं है जी। ये कहते हैं ये इश्क नहीं आसान वाली बात है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं आसान। इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यानी बहुत 50-50 के सारी साथ। बिल्कुल। MKJ 50-50। ज़रूर। तो यहाँ से अभी टॉपिक के पास वापस आते हैं। नाउ दैट वीव अंडरस्टूड कि मिड कैप का रोल क्या होता है और वॉलेटिलिटी कैसी होती है एंड हाउ यू कैन लेवरेज लार्ज एंड मिड अकॉर्डिंगली। कोई मिड कैप ईटीएफ के बारे में आपका क्या व्यू है? एंड हैव यू हर्ड अबाउट द न्यू एनएफओ दैट इज कमिंग आउट बाय नावी व्हिच इज द मिड कैप इंडेक्स ईटीएफ? देखो मेरी ना खुद निगाहें जो है ना, वो ETF को ढूंढती रहती है और इंडेक्स फंड को ढूंढती रहती है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि एज ए स्मॉल इन्वेस्टर ना, देखो मैं चाहे कितने पैसे लगा दूं, हूं तो स्मॉल इन्वेस्टर ही। अब मेरे पास कोई टीम तो है नहीं 200 आदमियों की जो रिसर्च करेगी, कंपनियों में जाके इंटरव्यू करेगी, उनके प्रोजेक्शंस को एनालाइज करेगी। तो हम लोग ना इतना एनालाइज नहीं कर पाते। जब हम किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, तो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क बढ़ जाता है। क्यों अनसिस्टमेटिक रिस्क? समझते हैं क्या होता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है कि मार्केट तो 20% बढ़ गई पर आपका शेयर गिर गया, मार्केट गिर गई आपका शेयर बढ़ गया। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। और इसकी मैं आपको खूबी बताता हूँ कि आज की लेटेस्ट न्यूज सुनिए आप। आज आपको पता होगा निफ्टी 50 में से IOC को निकाल दिया और उसकी जगह डाल दिया अपोलो हॉस्पिटल। तो यानी इसकी ना चर्निंग होती रहती है। आपको कुछ नहीं करना, जो अच्छी कंपनी है वो टिकी रहेंगी और जो बुरी कंपनी है वो निकल जाएंगी। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा स्मॉल इन्वेस्टर के लिए, अगर उनको समझ नहीं है तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में या ETF में ही पैसा लगाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और नावी का मैंने सुना है नाम, इनकी बारे में अच्छा, मतलब बढ़िया इनके फंड्स आ रहे हैं काफी सारे, ठीक ठाक अच्छे फंड से। तो
इसके इसके साथ साथ मुझे यू नो लाइक अ लॉट ऑफ थॉट्स दैट आर कमिंग इनटू माय हेड वेयर आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेट दिस अप वन सेकंड. So a lot of thoughts that are coming into my head, the things that you've said, the new strategies that you've given us. इसके चक्कर में what are the key things mid cap index fund can fulfill in somebody's portfolio? आपको क्या लगता है ये क्या रोल fulfill कर सकता है? A lot of people do not have as much as money as most of us, but angle ये है उनको portfolio बनाना है, उनको you know they have to do it systematically across, they have to be open to new opportunities yet be very stable. तो ऐसे from large to mid ऐसे करने के अलावा अगर आप बोलो कि लेके चलना है तो ये सारे जो लेके आगे बढ़ेंगे उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? स्ट्रैटेजी मैं फिर वही कहूंगा, देखो एक तो कैश खत्म नहीं होना चाहिए. नेवर इन्वेस्ट योर, मतलब वो पुरानी कहावत है, बचपन में पढ़ी है आपने, डोंट पुट ऑल एग्स इन ऑल वन योर बास्केट. एक्स इन तो वो वाली बात है भी, सारे पैसे अगर स्टॉक मार्केट में लगा दोगे तो गिरने पे क्या करोगे, भजन करोगे. आज कितने लोग दुखी हैं, कई लोग मुझे कहते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोन लेके लगा दूं. मैं कहते हैं लोन लेके नहीं लगाना चाहिए. पहली चीज, क्यों? आपके पास नहीं है तो ये आपकी गलती है. बाजार गिरा, सीखो कि जब बढ़ा हुआ था तो कैश रखना चाहिए था कि नहीं. जब शेयर मार्केट बढ़ती है तो आपको जी कैश अपने पास रखना चाहिए. ये अपॉर्चुनिटी है भी कैश रखना है, और उसको कैसे शेयर बेचो. नीचे है तो आप अपना वापस कैश को शेयर्स में कन्वर्ट करो. तो मोटा मोटा जी 50-50 का आप रूल फॉलो कर सकते हो. तो मेन तो यही है. और उसमें एक चीज बताऊं, जब मार्केट अच्छे हाइप पे होती है ना, एक ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूँ, नेवर इन्वेस्ट मोर इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप. हाइप पे है तो अब समझो उसमें थोड़ा कम और लार्ज कैप में ज्यादा, और जब गिरे तो रिवर्स. देखो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, मुजम्मिल आपको बड़ा अच्छा लगेगा. आपको यार सर ने $1,000,000 फॉर्मूला दे दिया, और जब वक्त आएगा लगेगा ही नहीं. जी इसके लिए बड़ा वेट डिसिप्लिन चाहिए, करना बहुत डिसिप्लिन चाहिए. वेट करना है और फॉर द राइट मोमेंट and हाँ. systematically investing is the key to thing. So with that, I think we've gathered enough content to get our new the next guest on the show, and he's also someone that I really like. He's the lead of Navi Mutual Fund, and he's going to help us understand you know his new fund offering and what his perspectives are on the market and whatnot. So if you had seen you know one of our episodes in the recent past, you would have noticed that Hari was a part of our show very recently. He spoke about some other shows as well, but इसके थ्रू मुझे हरी जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानने के बारे में पता चला, and which I would like to share. So Mr. Harish Shyamsunder is a very experienced fund manager and the head of business for Navi Mutual Fund, and यहाँ पे he's come with an experience of more than 16 years in capital markets, where he's building funds or doing market analysis or creating funds that are really helpful, or the one that really perform really well, you know, in the market. So Hari ji has over 16 years, and he is the perfect combination for anyone or like a young enthusiast like me who wants to get into investment market, because वो रिसर्च एनालिसिस के साथ साथ वो क्रॉस फंक्शनल चीजें भी करते हैं, एंड ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट you know that allows people like me to begin their journey altogether. He's an IM from Bangalore. He's from IM Bangalore and also a CFA, and we are more than humbled to get him on the platform today. So without further ado, let's have Mr. Hari ji on the platform. So can you hear us, Hari ji? How are you? कैसे हो आप? I'm excellent, Muzamil. Great to be here again. And Manojji, I've been listening to what you have said. I feel that I've learned a lot today. And some of what you have said, definitely, I would love to take away with me as well and apply. It made a lot of sense in terms of the amount of, in terms of maintaining a bit of cash. Thoda firepower रखना चाहिए जब markets go up to the top. Undoubtedly, I think there is some of it, and that system, and that discipline. I think वो discipline जो आपने कही है वो एकदम एकदम सही बात है. I think definitely a lot for me to learn as well, and that's what I love about the markets also. There's always something to learn. There's always, and it's great to hear from experienced veterans like you as well, to understand what, and you've seen a lot of cycles. So Hmm. getting that discipline which you have spoken about is something which I think all of us should try and
That's Yes, right. it's going to stay back with most of our viewers for sure. That time in the market is very important, so that you learn, and more important to Right. learn from it, you know. And 38 years के experience को इन्होंने ऐसे crumble करके एक छोटा सा formula दे दिया, which Correct. most of us will take it lightly, but people like you who've also spent a lot of time in the industry can analyze. So let's get into the next section of the show where Hari and I talk about a little bit about himself. I'm sure आप लोगों ने मेरा टूटा फूटा introduction हरी जी के बारे में सुन लिया, but हरी जी आप एक I'll give you an opportunity to speak a little bit about who you are, what are your thoughts about investments in general, what are you doing at Navi, and what are the aspiration, what is the goal that people should be looking forward to when they hear about Hari and Navi mutual fund coming together. Right. Right. I think just a bit like what Manoj has also said, ki, for me also, the part of it was about trying to understand stocks, trying to understand companies, research them. उसमें मुझे मजा आता था. तो इसलिए I got into the markets, and that's where I started off from in terms of my career. I started looking at some of the individual stocks, and at that point I was a research analyst. तो उसमें काम ये रहता था कि you need to go into depth. पूरा समझ में आना चाहिए कि what is the each company fundamentals क्या होती है, returns क्या होती है, um, ये कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों चलेगी या नहीं चलेगी. तो आई थिंक those were the things which I initially understood, was able to do, and then I eventually became a fund manager for some of the mid cap schemes, co-portfolio manage some of the large mid cap schemes where I was working earlier. Then and that was an active fund. That was something where I was selecting stocks, creating portfolios, and I was managing the mid and small cap portfolios there as. So वहाँ से I've joined Navi, and here the approach is slightly different. It is a bit more taking what I've learned and trying to apply it to a broader audience, and trying to bring a slightly new thought also to how to invest, how we should be looking at our portfolio construction. And here we are focusing initially a lot more on passive funds, because we believe that passive funds, maybe I think uh, there's a lot of, it's not yet fully understood, not yet fully appreciated कि इसकी पावर क्या है, इसकी एंड व्हाई इट इज द समथिंग जिसका टाइम आ चुका है. आई थिंक एवरीबody should consider having passive funds in their portfolio, and that is, I think, and now we have something which is a mid cap fund. I think we'll get to that as well, but Yes. this is the One of approach the which. things that I had heard about how evolved American markets are, because they're like more than 80% people are invested in passive funds in one form or the other. And India mein that is very small. I don't remember the percentage, but it's so small that there's still so much room for people to get, invested in the index itself. And in the last few weeks, I think at Paytm and otherwise, I've seen more than like 35 passive funds coming in. So there's a lot of excitement we can see. Definitely there are a lot of people watching this show as well, because they want to know more about midcap, like midcap index fund, and more about passive investing. But before we go there and discuss the fund at hand, I wanted to discuss something which is a little personal and something that I guess everybody will appreciate. The market is very volatile. You're in the business of actually delivering what we intend to do, in our heads theoretically. You're the guy who does it day in and day out for more than 15, 18 years. So, aapka perspective on the current market is very important to our viewers. What do you think is happening right now, despite the very specific things that are happening? But in general, aapko kya lagta hai when the market is correcting for reasons like these? What should people like me do, considering if I am like a long term investor who wants to build corpus over a period of time? Need I be scared? Is there a need for me to do something that I shouldn't to optimize on this opportunity, or should I just let be because the market's going to be volatile either way? What is your take on this? So I think the first thing which we should always remember in these times is that markets, they don't go up in straight lines. It's always an up and down, up and down, up and down.
which if you look back over the period of time, it looks nice, smooth in one direction, going up only. Yeah. But I think what we need to notice is that in the long term, there will always be these ups and downs. Okay, so if जी. you look at what has happened actually, so we made a top in October at about 18,600 Nifty पे. वहां से we are down about 10%. Now, हर साल में इतनी volatility we should be prepared for, and we should look at these as opportunities. थोड़ा ये chance मिल रहा है that you can जी. invest at slightly lower levels. So I would look at it in that perspective, that this is a chance, this is an opportunity for sure. Um, I think Would that you if you think do should somebody go in considering volatility is supposed to remain? There's an interest rate hike that we're going to see in the like the FED is going to increase the interest rate. Interest rate across the world would increase over a period of time. Um, फिर उसके साथ ऐसे ancillary चीजें वो हो रही हैं. Is this the correct time to actually begins investment journey if I haven't started yet? इस पे अगर आपके thoughts पता चले तो. No, absolutely. So I'll just speak on specifics on why people are worried about the markets, of course. So from that, good 10% can happen for any number of reasons. Abhi jo market ki worry hai is that your interest rates are going up because of inflation global. That is what is happening. Abhi jo hai, now we're worried about Russia mein jo ho rahi hai, Ukraine mein jo geopolitical situation जो है that is becoming a bit tense, and उसकी क्या impact हो सकती है मेरे oil पे या commodities पे, वो थोड़ा uncertain है. I think वो uncertainty की वजह से markets correct हो रही है. The point is that again, I think that you will end up seeing that some of this is also because of growth. Interest rates बढ़ रही है, inflation बढ़ रही है, क्योंकि underlying demand भी अच्छी है. So we should not lose sight of that. In the long run, we are looking at playing that game, focusing on the growth, longer term opportunity. 10 साल में क्या बन सकती है, because your portfolio equity investing is all about, you should not even think about it for the till unless you're looking prepared to be for 5 or 10 years. So Yeah. if you look at that perspective, do we think that the index will be where it is today? I don't think so. I don't think this is where it will be. Right? I think we will clearly see growth. The economy is on the verge of starting to pick up strongly. The number of reforms which have happened, and the earnings which we have seen have been holding up. So I'm pretty optimistic about what all can happen on the investment front and how the economy can pick up from here. Various sectors, across the sectors, if you look at them, there are reasons to be optimistic. And that is the reason why we think that we are at the cusp of starting a growth cycle, I think. And that is where we should look. When should we have started investing? Sometime back, not now. But The best. if Yeah. you haven't done that, then you should start now. I mean, you should think about doing it right now itself. Yeah, they say the best time to plant a tree was 20 years ago. I think that goes well with investing as well. That the best Yes, time to start investing was sometime in the past that you lost, and the next best time is now. But correct. crazy to know, and I guess that this correction has allowed midcap to become really valuable in terms of the price point that they're at. Something that we can consider, and you have an fund in place as well. So I would want you to perhaps take the audience through what this fund is all about. What are the aspects that you've taken into consideration? How is this fund going to fulfill the needs and requirements of some new age investors who are looking out to diversify their Sure. investment? So all over to you, and team can put on the presentation, and we can move forward. Sure. Right. So I think we've spoken a bit about what the power of the overall markets and investing is. I think what we need to also think about is, where does a mid cap come in? What is a mid cap? How do we define it? And what is the where do they fit into your portfolio? Now, if you break up the overall basket of all the stocks that are there, the first 100 are called large cap in terms of market cap. If you just arrange it according to the market, how large these companies are. Market cap is basically how large these companies are in terms of number of shares into the
price of the share. So if you just arrange it, the first 100 are called large caps, 100 to 250 are called mid caps. Now, the thing about mid caps is that, of course, they are not as large as the large caps, but they are not as large as small as small caps. So small caps are come after 250. Whatever all the stocks which are there below 250 are small caps. So mid caps, what we have seen is that they are in what is called a growth phase. So if you look at the stages of a company growth, you have at the starting stage, you will have a company which is a small cap. Small caps are companies with the idea. They start off with the idea of they have good ideas and they have built a bit of scale. Slight profitability is there, but they may be in industries which are very small, or they may be not yet market leaders. Mid caps have jumped from there to become either market leaders, or they are companies which are in large opportunities as well. And you've seen that many of these companies have had the ability to become multi-baggers because of being in that mix of being a leader as well as an attractive opportunity. So many are, and in the last year itself, you've seen very attractive returns for many of these companies. So I think they just show that they have a good risk reward ratio for compared to large cap and even small cap. I think there's a these kind of these stocks have had a very good track record in terms of growth, in terms of and in terms of managing volatility also. Now, what do we mean about what do we mean by that? If you look at just the returns, mid caps have outperformed large caps over the long investment horizons. But what that comes with is more volatility, which means that in any year, you can have a bit more of a fall. Perfect example is now. So if you look at from the peak, large caps are down about 10%. But mid caps are down 15%. So that is what I think Manoj was saying earlier, ki you can have a time to start looking at the mid cap more seriously because it has fallen more than the large caps. And these are companies which are a perfect mix between large cap and small cap. They're between the two. So large cap, you normally think bore ho gaye, itni badi ho gaye, aur kya growth aa jayega. But it normally linked. Large cap is good for stability. It is a good stable portfolio. If you want a bit of a kicker on, you're able to tolerate a bit more volatility, so then mid cap aa jati hai. And you've seen various mid caps which are market leaders and they hold dominant market shares. So I think these are not very small key or worried key. Will this company drown tomorrow? These are pretty large companies. These are companies which have shown the ability to grow and have good, strong asset bases typically. So these are in between. If you want a bit more risk with a bit more, and you're willing to tolerate a bit more returns, I mean, a bit more return volatility. Now you can invest in active funds, you can invest in passive funds. The question is why are we looking at launching a passive mid cap fund? So I think passive investing, it is something where you're just looking at replicating the index. And इसमें you may wonder कि इसमें बड़ी बात क्या है? You're not doing anything. कोई decision नहीं ले रहा है. But it actually ends up mirroring की what is a popular choice. जो companies अच्छी होती है वो बड़ी बन जाती है. जो companies which are not doing well fall out of the index, and the ones which are doing well from the small cap come into the mid cap index. So what we have seen, interestingly, हमने कुछ कुछ research किया है, and we have found that active Indian equity large caps funds have struggled to outperform the benchmark index. But what we have also seen, according to research, is that active mid-cap funds maybe वो है. So there are definitely active mid-cap funds which are outperforming, but the number of them which are outperforming is starting to become less. So the mid-cap index is something which is becoming attractive from a longer term. Particularly if you're thinking about 10 years, 15 years, you're building a portfolio. मुझे mid-cap, you say that okay, I'm willing to tolerate a bit of short-term volatility, but I want that extra return also. Then you're worried if you pick maybe an active fund, you may be worried that fund manager is very good, but will he stay for long? And you may have to worry about that. But in a passive mid-cap fund,
the fund manager is always with you because that is the mid cap index itself which is managing it. So I think the track record has shown that. And here in Navi, what we have believed in is a low cost exposure to mid caps in terms of low cost exposure to passive investing itself. So we have the lowest expense ratio, what we call the lowest cost exposure, at least at current stage. It's not, it can be subject to change, but this is something at today we can definitely look, and this is the approach which we have been following in all the funds. We have been offering the lowest expenses for any of the index funds which we have launched so far. And so the Navi Nifty Midcap Index Fund, I think, is something which you should really consider if अगर पैसिव अगर मिड कैप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो फिर डेफिनेटली यू शुड कंसिडर दिस एंड दिस इज समथिंग व्हिच will be able to provide you the mix of both that growth kicker for mid caps and wo and you know your ability to um, stay the course on mid cap investing as well. So this is just again we're saying that the expense ratio is the at 12 basis point. What you say 0.12%, which is for a year. I mean that's what we are charging right now, which is the lowest in the category. It's something which we have looked to do in every fund. So in summary, I'd say that again, passive investing in terms of the mid cap index is something which you should definitely consider. The trend is definitely moving in that direction, and you should also be a part of it. Awesome. Awesome. So we now have a clear-cut view of what the fund has to offer. There are a couple of guys on the chat window who are asking very specific questions, which I hope you can answer for them. What is the alpha beta ratio of Navi Midcap 150? I want to compare with existing midcap available in the market, like Junior Bees, etc. This question has come from Lokesh. If you have the answer with you, like the numbers, otherwise you can give it to me and I can get in touch with Lokesh or provide it in the comment section later after the show. So over to you. What is the alpha beta ratio if it's available with us right now? Yeah, I'm not entirely sure what ratio we are looking at here, but I think Junior Bees, for example, is uh, that is I think the Nifty Junior which we are looking at, which is the Nifty Next 50, which is actually a large cap product that falls under the 50 to 100 in terms of the size. So I think Yeah. that is what the size actually where this falls. Uh, Okay. in terms of what the beta is, we will look to track the index itself, the Nifty Midcap Index 150, and the beta for on compare on that itself will be one. It'll track it as closely as it can, so the beta on that will definitely be one. Awesome. So I'm just looking out for other questions that may have come, which we have not covered so far. Neeraj, there's a section in which we've helped you show the dissipation of companies in the Index 150. Um, and yes, we've taken care. So this is we've covered most questions by answering ourselves, and I'm happy that we have come to a stage where all the questions are fully answered. That's great. There's one thing that we haven't done for the day, and before I actually take you on a conversation with Manoj, I want to ask this quiz out there so that there is some prizes to distribute. So the question here is, मनोज जी ने कुछ 2-3 स्ट्रैटेजीज बताई आज के शो में एंड कोई तो वो स्ट्रैटेजीज के नाम आपको लिख के भेजने हैं. दे आर प्रोप्राइटरी मनोज कुमार जैन्स स्ट्रैटेजीज एंड चीट कोड्स आई वुड से. सो वो आप अगर लिख के कमेंट करें तो वी माय टीम कैन गेट इन टच विद यू एंड वी विल गिव यू वन ऑफ Manoj Kumar Jain's very favorite books that he reads or recommends to all newcomers, right? So this is a section. Please ensure that you subscribe because we'll be in a position to find you then and give you the book that he recommends. Now, moving to the next part, which is the most important part of the show, I guess, the part that I'm very excited personally. This is the part where the influencer speaks with
the expert finance advisor, in one form. So we have Manoj Kumar Jain ji and we have Hari ji, who can now go in this Ghamasan Yudh to give you the answers that you generally don't receive outside. So Manoj ji, आप आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं. So over to you, sir ji, and Hari ji, the plane is all yours. अब तो हरी जी मैं तो एक्सप्रेशन ही दे सकता हूँ. मतलब युद्ध का जमाना चल रहा है, तो मैंने ना क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई थी और मैं अपनी मैडम से कह रहा था, वाइफ तो सामने ही बैठती है, मैंने कहा मैंने मिसाइल्स तैयार करी हुई आज 50 क्वेश्चन है लगभग, आज दाग दूंगा मैं सारे के सारे हरी जी के ऊपर. लेकिन आपकी जो प्रेजेंटेशन थी इतनी लाजवाब थी कि वो सारी आपकी जो प्रेजेंटेशन थी मैं कहूंगा वो एंटी मिसाइल वेपन था. तो क्वेश्चन बचे ही नहीं. मैं बैठा चेक कर रहा था, यार ये भी हो गया, ये भी हो गया. मेरी वाइफ भी देख रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, क्या पूछोगे आप. तो सारी जो हमारी क्वेश्चंस है पहले ही रिप्लाई कर दिए. तो मैंने कहा मैं तो एक्सप्रेशन ही दे सकता हूँ. पर देखिए सेक्शन है तो कुछ अब वो कहते हैं ना उसकी जो सेक्शन की फॉर्मेलिटी है या जो उसका जज्बा है वो तो पूरा करना पड़ेगा. तो मैं कुछ क्वेश्चन, और तो आपने इनको भी आंसर किया हुआ है पर थोड़ा कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, पर किया हुआ है. पहला मेरा ये प्रश्न रहेगा जो थोड़ा सा शायद आपने टच नहीं किया हो, वो ये कि आपने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, ईटीएफ क्यों नहीं किया. राइट. तो इंडेक्स फंड जो है, आई थिंक इट इज अ सिंपल प्रोडक्ट. आई थिंक ईटीएफ जो है, आई थिंक इसमें डीमैट की जरूरत होती है, आई थिंक, एंड नॉट एवरीबडी हैज दैट राइट नाउ. Index fund is easy to own and operate, so which is why I think just in terms of ease of being able to buy it, I think that's why we have launched an index fund. ETFs bhi hai. ETFs also are for any savvy investors जो जिनके पास वो डीमैट अकाउंट वगैरह है and they are actively trading in stocks, वो ETFs ले सकते हैं definitely. But we have looked to launch. आपका ईटीएफ है, नावी का ईटीएफ भी है इसका, मिडकैप नहीं 150. नहीं. This is an index fund. This is a midcap index fund which we have launched. ETFs also we are looking at. We will look to launch sometime in the future as well. तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है जी उसको तो आप जल्द से जल्द लॉन्च करिए ना. उसमें ना एक्साइटमेंट आती है, वो जो मैंने आपको डायलॉग बोला था, मैं रुकेगा नहीं, वो क्या दिन भर बाजार गिर रहा होता है ना, आपने देखोगे शाम को रिकवर कर जाता है. तो जब गिर रहा होता है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है. 4 आने नीचे पे 100 शेयर ले लिए और 10 पैसे गिरा, 100 ले लिए, 10 पैसे गिरा, 200 ले लिए. भाई तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा, तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा. तो ईटीएफ जरूर लॉन्च करिए, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है. तो अगर आप ये करेंगे तो बहुत मजा आएगा जी, क्योंकि उसमें बड़ी एक्साइटमेंट आ जाती है. पहले क्या होता था, इन्वेस्टर ना पैसिव से होते थे, अपना डाल दिया. आजकल ना ये यूट्यूब कह लीजिए या सोशल मीडिया कह लीजिए, मतलब हर आदमी के अंदर ने करंट सा आ गया. और आपने महसूस किया होगा हमारा टाइम और ये टाइम में बड़ा चेंज आ गया. आजकल लोगों में ना बच्चे को, मेरा बेटा भी लगा रहता है, मैं कहता यार छोड़ यार तो अपना काम करता है, वही नहीं पापा कुछ तो रहना चाहिए. एंड वो मुझे समझाने की कोशिश करेगा. कहने का मेरा मतलब ये है कि वो करंट जो बना रहता है ना, तो आप ईटीएफ जरूर लॉन्च करिएगा. तो डेफिनेटली आई थिंक एक और बात जो है, आई थिंक इंडेक्स फंड्स में जो है जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, वो सिर्फ इंडेक्स फंड में डाल के आई थिंक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं. लेकिन मैं फिर भी आपको फीडबैक दूंगा. आज जो करंट इन्वेस्टर यंग जनरेशन है ना, बड़ी एक्टिव हो गई है. ऑफिस से निकलते हैं और मेरी वीडियो शाम को 9 बजे देखते हैं. मान लो मैंने नहीं डाली तो वो कमेंट पे कमेंट आते जाएंगे, सर क्या हो गया, सर ठीक हो, सर तबीयत सही है. मतलब वो ऑफिस से आए थके आ रहे, अब घर पे लेकिन वो बैठे हुए. अच्छा और मजेदार बताऊं, कई लोग लिखते हैं सर मेरी वाइफ भी आपके साथ बैठ के देखती है, मतलब मेरे साथ मेरी वाइफ भी आपका शो देखती है. तो मैं यहाँ सिर्फ क्या अर्ज कर रहा हूँ कि वो जमाने चले गए. हस्बैंड काम कर रहा है तो वाइफ की ड्यूटी लगा जाता है कि अगर ये शेयर गिर जाए तो आप ले लेना. हाउस वाइफ भी आजकल बड़ा पार्टिसिपेट कर रही है. तो थोड़ा सा आप एज ए कस्टमर रिक्वायरमेंट है, मैं मार्केट का फीडबैक दे रहा हूँ. जब कंफर्टेबल हो, आपकी अपनी कंपल्शंस होगी, ध्यान में रखते हुए ईटीएफ जरूर लॉन्च करिएगा तो आनंद आ जाएगा. बाकी तो देखो क्वेश्चन आपने सारे कर ही दिए थे. अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ जो हर कोई पूछ भी लेता है और आपने पार्टली उसको आंसर भी कर दिया है कि भाई और भी प्रोडक्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो हम सिर्फ नावी में क्यों आप कॉन्सेंट्रेट करें. कई लोग पूछेंगे सर आपने शो भी किया तो नावी में हम क्यों इन्वेस्ट करें, और भी तो म्यूचुअल फंड है, मिड कैप 150 के और भी है. तो इसमें कुछ कोई खास बात आप बताना चाहें व्यूअर्स को भी, हमारे फंड में ये थोड़ा सा एक उसकी अलग यूएसपी है या उसका अलग स्ट्रेंथ है, कोई आपके विचार ऐसी बात. तो इसमें दो बात है. सो
हर मिड कैप फंड में एनी फंड जो है एक्टिव फंड्स में जो खूबी है वो अलग अलग स्टॉक्स चुनते हैं. तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी active fund manager who is able to do well and beat the index. Definitely, that is what the strength is. But it is also true that every index fund which is tracking the same index is the same in terms of the stock selection. Market cap weighting, the same portfolio is there. तो अगर सब कुछ एक है, अगर आप मार्केट में जाओगे और यू फाइंड दो चीज एकदम एक है, तो यू विल गो बाय प्राइस, राइट? तो दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी से दैट अगर सब कुछ सेम ही है तो सबसे सस्ता वाला लेना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट नावी इज promising, and that is what we have promised in the past as well with the previous funds also which we have launched. So definitely अगर कुछ लेना है in these mid cap index, and definitely as I said there is a good case for one to pick that up. तो this तो is then you should pick up this. सस्ता कैसे है? हमारा एक्सपेंस रेशियो लीस्ट है, इस वजह से सस्ता है Yes. थोड़ा सा. Yes. So that is one thing. एक बात जो है which is the expense ratio जो होती है, which is that any mutual fund charges the customer for managing the fund. Right. And हमारी जो है it is definitely the lowest. You can compare it, you can search and find what anybody else has got, and you'll find that this is definitely the lowest. दूसरी बात जो है which we would like to talk about is what is called tracking error जो होती है. ट्रैकिंग एरर ये होती है कि ये इंडेक्स ऐसी जा रही है तो आपकी फंड भी ऐसी जा रही है या थोड़ी साइड में जा रही है. तो दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग एरर या ट्रैकिंग डिफरेंस. दोनों में थोड़ा अंतर है, बट इट इज मेजरिंग कि आप कितनी दूर जा रही है इंडेक्स से. तो हमारी जो है जो वो पहली प्रोडक्ट जो लॉन्च किया था हमने जुलाई में, उसकी ट्रैकिंग एरर अभी पिछले 2-3 महीने में देखोगे तो फिर दैट इज द लोएस्ट ट्रैकिंग डिफरेंस ऑल्सो. इट इज गोइंग क्लोजेस्ट टू द इंडेक्स एज वेल. तो हमने जो वहां से जो लर्निंग या ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो किया, व्हाट यू हैव लर्नड एंड यू हैव इम्प्लीमेंटेड देयर, यू विल ब्रिंग दैट हियर आल्सो एंड ट्राई टू बी द लोएस्ट ऑन दिस फ्रंट एज वेल. मतलब दो काउंट्स हो गए बेसिकली, एक हमारा एक्सपेंस रेशियो कम हो गया और दूसरा ट्रैकिंग एरर काफी कम है, नेग्लिजिबल है. तो वो हमारी यूएसपी हो गई. बिल्कुल सही. अब एक और थोड़ा सा क्वेश्चन था, नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कि भाई आपने मिड कैप किया, बहुत अच्छा लगा. मेरी भी निगाहें लगी रहती हैं कि मिड कैप में लगाना, और इंडेक्स की आपने पूरी चर्चा कर दी. मैंने कहा मेरी मिसाइल तो खत्म हो चुकी है सारी, वो मेरे को सारे जवाब ऑलरेडी मिल गए, आपने सब दे दिए. अब मेरा प्रश्न था कि स्मॉल कैप में क्यों नहीं आपने लॉन्च किया? देखिए अब अट्रैक्शन तो आ गई कि एक्सपेंस रेशियो कम है, ट्रैकिंग एरर का भी अच्छा चल रहा है, एंड वी कैन वेरीफाई फ्रॉम अदर फंड्स जो आप मैनेज कर रहे हैं पैसिव. तो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं चलो मिड कैप आपके लगाता हूँ, तो व्हाई नॉट स्मॉल कैप? आपने स्मॉल कैप इस वक्त क्यों नहीं लॉन्च किया? या आपका कुछ विचार है, या आपको लग रहा है वो टाइमिंग ठीक नहीं है, ये टाइमिंग सेट सिर्फ मिड कैप के लिए अच्छी है? मतलब क्या आपकी फीलिंग है इसके पीछे, थॉट प्रोसेस आपका क्या है? हमने डेफिनेटली रिसर्च किया है कि हमें लॉन्च करनी चाहिए कि नहीं, और हमने ऐसा नहीं सोचा कि टाइमिंग अच्छी है या नहीं, पर हमने सोचा है ये सही प्रोडक्ट है कि नहीं. और सही प्रोडक्ट होता अगर हमें लगता कि ऐसा है कि आपको हमने प्रेजेंटेशन में भी हमने कहा था कि many of the fund managers nowadays struggle to beat the index. Many of the funds are struggling to beat the index. That is what the numbers are showing. वो ट्रेंड अभी स्मॉल कैप में नहीं साफ आ रहा है. And that is something which we have acknowledged. We are saying that it is still possible for you to make a portfolio in the small cap where you are generating better returns than the index. So the index is not a very good or very efficient product in the small cap space right now. It may be, शायद maybe तो 3 या 5 साल के बाद हो सकती है, but अभी जो है I am saying that small cap में active का scope है. You can make a portfolio which will beat the index, and बहुत funds है जो ऐसे कर रही है. So I think if we look to launch small cap, we will look to launch a active fund जो है, which will be able to provide that same returns and look to again beat the index in that. So that is the clean reason why we have not launched small cap and why we believe that mid cap में index में डालना चाहिए. परफेक्ट. बस यही मैंने कहा जी, मेरी 2-4 छोटी-छोटी मिसाइल्स रह गई थी, बाकी तो सब आपने कवर कर ही ली थी. Fantastic. Thank you. So nice. I think this was a worthy challenge where मिसाइल अच्छे थे और आपके जवाब भी बहुत अच्छे. I think I understood as well. So I consider myself as one of the people who know least about market.
मुझे बहुत अच्छे से समझ आया तो आई गेस दिस इज वर्किंग really fine. So with this, I think we're come to a closure of the event that we have today, which is investing in small cap, mid cap companies. And आप small cap इतना बोले कि मेरे दिमाग में small cap रह गया. But this is what we come to. And before we go, I really want to thank whoever showed up on our show today. We had at a time more than 5,000 people who are watching it. It really feels nice that आप हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, हमारा शो देख रहे हो. बट हम चाहते हैं कि आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स भी लिखें, सो दैट अगर कोई चेंजेस करने हो शो में, तो मैं तो फुल ओपन हूँ आपको जो चाहिए वो आपको पहुंचाने के लिए. बट अगर आप बताओगे नहीं तो मैं कैसे कर पाऊंगा. तो मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने दोस्तों से बताएं, लोगों के साथ शेयर करें, घर वालों को बताएं. जैसे मनोज जी भी अपने वाइफ के साथ वीडियो देख रहे हैं, इन वन फॉर्म और दी अदर. तो आप भी अपने दोस्तों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं कि देर आर अपॉर्चुनिटीज वेर यू कैन लर्न अ लिटिल मोर than you can from traditional videos. And we have two experts who sit down and rack their heads against each other to give you something that can really be valuable for your decision making. So thank you very much, and I hope you can join us on our next episode, which is on the 28th of February, the last day of the month. And हम अनंत के साथ आने वाले हैं वापस, जहाँ पे हम लोग एक और एक चीज डिस्कस करेंगे. So please subscribe so that you know when we come in, you get the notification, and we can do this one more time. So thank you very much, Hariji, for taking out time from your very busy schedule. I know how difficult it was to get this slot with you, but I appreciate the effort that you put in. And Manoj ji, आपके साथ तो बात करने मजा ही आ गया. I think this has been by far the most entertaining show that Paytm Money Talks has ever hosted. So thank you for giving us a new benchmark of how we can hold our conversations, and कैसे हम लोगों को मनोरंजित करते हुए भी बहुत ही डिफिकल्ट चीजें बहुत आसानी से बता दें. तो thank you for teaching me a lesson in different ways, and I appreciate both your presence. So with that, I would say thank you very much, and call for the end of the show. See you again, and hopefully till then keep investing. Okay, chalo, see you. Bye bye. Thank you. Bye.